Good morning. Today we will see energy sources and node analysis. We will wait for other students for 1 minute, then we will start our class. Am I audible? Please respond anyone. You can put a message or you can unmute and talk. Okay. जब तक बाकी लोग आते हैं तब तक हम प्रीवियस सेशन में जो देखा है वो रिवाइज करते हैं. In previous section we have seen about Kirchhoff current law and Kirchhoff voltage law. So Kirchhoff current law states that at any node incoming current is equal to the outgoing current. So what does mean by node? If at any point in a circuit instead of one, two or more than elements are connected, then that point is called as a node in electrical circuits. जब एक पॉइंट है सर्किट डिवाइसेस में जिसको दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कनेक्टेड है तो हम उसको क्या बोलते हैं? नोड. तो अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स करंट लॉ क्या होता है? वो नोड के डायरेक्शन में जो करंट आ रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू जो करंट वहां से जा रहे हैं. Then we have seen about Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's voltage law states that algebraic summation of voltages at closed path is equal to 0. मतलब जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स इन द क्लोज पाथ, हमारे पास जो लूप है वहाँ पे जितने भी वोल्टेजेस है या फिर जो भी एलिमेंट्स है वहाँ पे उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उनका जो समेशन रहेगा वो क्या रहेगा? इट विल ऑलवेज इक्वल टू 0. इट मीन्स Kirchhoff voltage law states that algebraic summation of voltage across all elements in a closed path will be equal to 0. Now we will start our today's session. In today's session, we have to see energy sources. So energy sources means what? If we are applying source, it is nothing but energy. It means what? If we are giving biasing मतलब voltage sources, then we are calling these as a electrical sources. सबको स्क्रीन दिख रहा है? So in electrical sources, you guys can see there are two types of electrical sources. These are nothing but analog and digital. If voltage source, given voltage source is having constant value, then we can call this as constant voltage source, or we can say this is the digital voltage or this is the digital source. And if it is changing with respect to time, you guys can see it is changing with respect to time. It is changing in similar manner, but it changes it. And if you see this diagram here, value of voltage is constant. So these are nothing but the energy sources with respect to voltage. And if there is a current, it is also a electrical sources because it is also giving a electricity. It means what? If it is having constant value of current, then we can call these as a constant current source. These are the electrical sources we are using with electrical devices. Now we will differentiate these electrical sources. Electrical sources are divided into dependent and independent sources. Independent voltage source, as name defines, it will be independent. It means what? It will not depend on other voltage or current. It means what? The value of voltage source does not
depend on any other voltage or current. Independent voltage source can be ideal voltage source or a practical voltage source. And independent source can be voltage or a current. मतलब जो एनर्जी सोर्स है वो वोल्टेज भी हो सकता है या फिर करंट भी हो सकता है, बट वहां पे क्या है, इट विल नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर वोल्टेज और करंट. And ideal or it will be a practical. We will see thoroughly later. We will see here only differentiation between independent and a dependent energy source. As name define, dependent energy source will be depend on other voltage or a current. It means what? Dependent sources are called as control sources because we can control here value of voltage or current by other voltage or current. मतलब these values are depending on other voltage and current. So we can control this voltage and source, and we can call this voltage source as a voltage or current source as a dependent sources. For such sources, the value of voltage or current depend on some other voltage or current in the circuit. It means what? The value of voltage or current will depend on other electrical sources. These are called as a dependent energy sources. Now we will see firstly ideal voltage source. ये जो ideal है independent. Firstly we will see about independent, then we will move to the dependent. In independent we are having two types: voltage independent voltage source or independent current source. So first we will see ideal independent voltage source. As you can see here, this is the circuit diagram here. We can define voltage by positive and negative terminal, or we can define, instead of circular, we can define here battery. It means what? तुम यदि मल्टीपल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं. और तुम मल्टीपल बैटरीज कनेक्ट कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? जनरेटर. And as you guys can see here power is constant. We are getting here constant value of power. That's why we can call these are the ideal voltage source. It means what? This value will remains constant. The ideal voltage source gives constant voltage across its terminal. It does not change with change in current, even if value of load is connected or not connected. The terminal voltage of ideal voltage source will be remains constant. मतलब तुम यहाँ पे इंडिपेंडेंट बोल रहे हो, मतलब वो अदर वोल्टेज और करंट पे तो डिपेंड है ही नहीं. बट इफ यू आर गिविंग एनी रेजिस्टेंस लोड टर्मिनल, मतलब लोड रेजिस्टर कनेक्ट भी करते हो, देन भी उसका वोल्टेज का वैल्यू कांस्टेंट रह रहा है. देन वी आर सेइंग दिस वोल्टेज सोर्स एज अ आइडियल वोल्टेज सोर्स. An ideal voltage source has zero internal resistance. As we are saying, the value of ideal voltage source will remains constant. It will not change with other parameter. So here its input internal resistance will be 0. Then if we consider any load is connected, हम यहाँ पे ये जो टर्मिनल है वोल्टेज सोर्स के, ये पॉजिटिव और निगेटिव, वहाँ पे यदि हम एक आधा लोड कनेक्ट कर रहे हैं, and if we are not connecting any load, if we connect the load, this current will start to flow through that load, but value of voltage source will remain constant. मतलब यहाँ पे लोड हम कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो फ्लो होगा, हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो, बट ये जो वोल्टेज सोर्स है उसका वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा.
It means what? If we are connecting any load to the voltage source, then also terminal voltage or load voltage will remain constant. Its value will not change with load resistor. That's why we are calling this as a ideal voltage source. Now we will see practical voltage source. Practical voltage source will consist of internal resistance. हम आइडियल में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा इट इज हैविंग 0 ओहम रेजिस्टेंस, बट practically there will be some internal resistance. We can denote this internal resistance by R suffix S. This is nothing but the internal resistance, and we are connecting this resistance in series with this voltage. That's why I have given here denotation R suffix S. So here this source resistance is in series with a practical voltage source Vs, where load is not connected. If we are not connecting load here, then current Rs will be 0 because it is an open circuit. If there will be closed path, then this current will flow through the load. But as we are not connecting any load, then what happens? This circuit becomes open and here current will flow will be 0. It means what? If we connect load, circuit gets completed and we are getting here loop. It means what? Here closed path will start to, as here we are getting closed path, current start to flow through this load. This will cause some voltage drop across this resistance. मतलब जब हम यहाँ पे voltage source दे रहे, it is means we are applying any external bias. हम यहाँ पे external supply Vs दे रहे हैं ये resistance को. This is the internal resistance. And if we connect any external load, what will happen? This current will start to flow through this resistance, and due to which this voltage drop will reduces and some value of potential drop will goes to this internal resistance. And if you apply here KVL, we will get the equations VL equal to, यहाँ पे जो लोड रहेगा वहाँ का वोल्टेज VL, we will get VL equal to Vs minus IL into RS. ये जो I है यहाँ पे लोड कनेक्ट करेंगे तो हम उसको IL कंसीडर कर सकते हैं, या फिर तुम I भी डिनोट दे सकते हो. मीन्स वी विल गेट हियर VL इक्वल टू Vs माइनस IS इंटू IL इंटू RS. IL या फिर IS that will have the same value, because if instead of one component there are multiple components connected in series, then also current value flowing through all these components will have same value. मतलब सीरीज में यदि एक से ज्यादा एलिमेंट कनेक्ट है तो उसमें जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. Ideally, if you see, this value of voltage source will remains constant, but practically if we are connecting here any load resistance, this voltage will drop. It means what? Some value of voltage will goes to load resistance and this value will decrease. You guys can see this is the graphical structure for the practical voltage source. Now we will see ideal and practical voltage source. These are the same circuit diagram if you guys see, but as it is a ideal voltage source, we can consider its internal resistance value will be 0, but practically there will be some resistance, and as there will be some resistance, there will be some voltage drop. मतलब यहाँ पे यदि कोई यहाँ पे रेजिस्टर है तो वो क्या करेगा? अपोज करेगा करंट को फ्लो होने के लिए, और यहाँ पे जो वोल्टेज है उसमें का कुछ वोल्टेज यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा.
It means what? Ideally, internal resistance is 0, but practically there is a finite value of resistance will appear internally. Now we will see classification of voltage and current sources. And these things will be same for current also. But instead of voltage source, we have to define here current. And instead of internal resistance, we have to define their practically connected resistance. Because क्या होता है, सीरीज में जो होता है करंट सेम होता है, और if there are multiple components connected parallelly with each other, वोल्टेज सेम रहता है बट करंट अलग रहता है. करंट क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है. We will see it later. First we will see classification of voltage and current sources. There is a two types of voltage and current source. These are nothing but independent, and another is dependent voltage source. Independent voltage source is again divided into ideal and practical, as well as these are divided into time invariant current source, time variant current source, time invariant voltage source, time variant voltage source. Dependent voltage source will be divided into voltage dependent voltage source, current dependent voltage source, voltage dependent current source, और current dependent current source. मतलब डिपेंडेंट मतलब क्या है कि वो करंट पे यदि डिपेंड है तो हम उसको बोलेंगे करंट डिपेंडेंट, और वहां पे यदि करंट है तो हम बोलेंगे करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स. एंड इफ voltage of any circuit is depending on current, then we can say current dependent voltage source. और यदि हमारी जो सर्किट है वो वोल्टेज डिपेंडेंट वाली है तो we can say voltage dependent voltage source, यदि वो वोल्टेज पे डिपेंड है. और वो सर्किट जो वोल्टेज सोर्स की है, if it is depending on current source, we can say it is a current dependent voltage source. Now we will see about independent voltage sources. Independent voltage sources, टाइम इनवेरिएंट मतलब क्या? टाइम यदि वैरी नहीं हो रहा है, इट मीन्स व्हाट? एज द नेम इंडिकेट्स, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सोर्स विल डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टाइम. मतलब यहाँ पे यदि हम करंट सोर्स देख रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? If value of current does not change with time, then we can call this source as a time invariant current source. And if there is a current will change with respect to time, then we can say this is the time variant current sources. This means if value of current source changes with time, then we can call this as a time variant current source. Then we will see time invariant voltage source. As name defines, the value of voltage source will not change with time, and this such voltage are called as a DC voltage. It means what? डिजिटल वोल्टेज, क्योंकि उसका वैल्यू जो है कांस्टेंट रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा है. एंड इफ द वैल्यू ऑफ वोल्टेज चेंजेस विद टाइम, देन वी कैन कॉल दिस वोल्टेज एज अ टाइम वेरिएंट वोल्टेज सोर्स, और वी कैन कॉल दिस वोल्टेज एज अ एसी वोल्टेज. मतलब एसी वोल्टेज जो है, तुम मैथमेटिकली जो एस साइन होता है, if you are writing S sign horizontally, then we can call this is as a time variant. और ये जो हम पॉजिटिव और निगेटिव डिनोट कर रहे हैं, this is called as a DC voltage because its value will remain constant. These are the basic differences between independent and dependent voltage and current sources. Now we will see node analysis. So node analysis. Already we have seen about node. Node is nothing but if there is a lots of elements
connected, and at any point, if there are two or more than two elements are connected, then we can call this point as a node. Then if there are, instead of one loop, if there are multiple loops, then what we have to do in node analysis, we have to select one of the n nodes as a reference node. मतलब हमारे पास यदि वहां पे ज्यादा, हमारे पास यदि बड़ी सर्किट है और वहां पे डिफरेंट लूप है, तो हमें हर एक लूप में क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सिलेक्ट वन नोड ऑफ एन नोड एज अ रेफरेंस नोड that we define to be zero voltage or a ground voltage. Assign voltages V1, V2, Vn minus 1 to the remaining n minus node. हम क्या कर रहे हैं, एक जो नोड है, हमारे पास n नोड है, उसमें से एक नोड को हम रेफरेंस नोड समझ रहे हैं और उसका वोल्टेज हम क्या कर रहे हैं, जीरो कंसीडर कर रहे हैं. तो हमारे पास बाकी कितने नोड रहे हैं, n माइनस वन नोड. तो हम उसको नाम दे सकते हैं कि वहां पे जो वोल्टेज है, V1 voltage, V2 voltage, Vn minus 1 voltage there will be, and these voltages are referenced with respect to the reference node. तो हमें क्या करना है, जो हमने रेफरेंस नोड कंसीडर किया है, वो रेफरेंस नोड के साथ वो सभी नोड का हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है. फिर हम क्या करेंगे, we have to apply KCL to each of n minus 1 नॉन रेफरेंस नोड. मतलब जो रेफरेंस नोड है उसको छोड़ के बाकी जो नोड है वहां पे हमें क्या करना है, केसीएल अप्लाई करना है. तो हमें अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वी विल गेट वैल्यू ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेज. हमें अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इक्वल टू आई आर मिलता है. तो हमें यदि करंट कैलकुलेट करना है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आर. तो हमें जो रेफरेंस नोड है उसको छोड़ के बाकी जो नोड है वहां के लिए हमें केसीएल अप्लाई करना है. इफ देयर इज इनकमिंग करंट, हमें वहां पे पॉजिटिव लेना है उनको कैलकुलेट करते वक्त, और इफ देयर आर आउटगोइंग करंट देन वी हैव टू टेक एज अ नेगेटिव, और यू कैन टेक समेशन एट समेशन ऑफ इनकमिंग इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग. तुमको मैथ्स में जैसे कंफर्टेबल है कैलकुलेशन यू गाइज कैन डू. देन व्हाट वी हैव टू डू, we have to solve the resulting simultaneous equation to obtain the node voltage. हमारे पास जितने भी नोड्स हैं वहाँ के वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हमें जो यहाँ पे इक्वेशंस मिले हैं केसीएल अप्लाई करने के बाद, वो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है. देन वी कैन कैलकुलेट नोड वोल्टेज फॉर ईच एंड एवरी नोड. और हम Vn जो है, जो रेफरेंस नोड है, उसका तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि उसका वोल्टेज जो है जीरो वोल्टेज है. We can see here one example. You guys can see we are saying node 1. म्हणे मी पुण्यातच आहे, चालेल ना असं सांगा ना तुम्ही. त्यांच्या ग्रुपवर कुठून गेलाय हा बायोडाटा, मग तेच कंचा. If you are in facing any difficulty then you can ask, otherwise please mute, because बाकी सब जो बच्चे हैं उनको भी आवाज में डिस्टरबेंस होता है, उनका समझ में नहीं आएगा. हाँ, so here you guys can see we are saying this as a node because यहाँ पे जो है एक और एक कनेक्ट है, यहाँ पे भी दो से ज्यादा कनेक्शंस है, यहाँ पे भी दो से ज्यादा कनेक्शंस है. So we guys can give the names node 1, node 2, node 3, and we are considering this as a reference node. So apply KCL to each of three non-reference nodes, and we have to, what we have to do according to KCL, sum of currents leaving the node is zero. It means what, incoming current is equal to the outgoing current, or algebraic summation of current at any node will be equal to zero. तो तुम देख सकते हो यहाँ पे जो नोड 1 है, यहाँ पे हमें 2 एम्पियर करंट का वैल्यू मिलता है. अकॉर्डिंग टू केसीएल हमें क्या करना है, करंट का वैल्यू फाइंड करना है. तो हम यहाँ पे ये जो नोड है, यहाँ पे ये जो नोड है, यहाँ पे ये 2 एम्पियर भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, और ये I2 भी कनेक्टेड है. तो इफ यू अप्लाई KCL you will get here
2 ampere plus current across current through resistor R1 plus current through resistor R2 will be equal to 0. So I am writing here 2 plus I1 plus I2 equal to 0. फिर यहाँ ये नोड के लिए ये नोड 2. What we will do again, if you guys can see, I2 is coming, I4 is leaving. तो तुम्हें जैसे साइन लेना है, तुम यदि इनकमिंग के लिए निगेटिव ले रहे हो तो आउटगोइंग के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव लेना पड़ेगा. If you guys see at the node 2, I2 is incoming and I3 and I4 are outgoing. So I am taking I2 negative. So that's why we have to take I3 and I4 positive. So we will get the voltage across this node. यहाँ का वोल्टेज मिल जाएगा मुझे, मतलब V2 with respect to ground. तो वो कैसे मिलेगा, I2 minus I3 plus I4 will becomes 0. अब हम यदि ये तीसरा नोड देखोगे, you guys can see here this current is coming, this current is having value IS. Yeah, so I am writing here IS. This is incoming, so I am taking its negative. I4 is also incoming to this node, that's why I am writing here minus I4. But I5 is outgoing, so according to KCL, we can write minus I4 minus IS plus I5 equal to 0. And if you guys solve these equations, you can solve by matrix or you can solve these linear equations by any mathematical method, and you will get the value of these voltages here. We will see one example. How we will solve? Firstly, we will get the value of here voltages. Firstly, we will get the value of this current. What we have to do? We have to solve the voltage. हमें current का value solve करने के बाद वहाँ रुकना नहीं है. हमें क्या करना है? नोड एनालिसिस में भी हमें voltage value कैलकुलेट करना है. बट KCL हमें क्या बताता है? KCL हमें सिर्फ करंट के वैल्यू कैसे सॉल्व करना बताता है. अकॉर्डिंग टू KCL हम क्या करते हैं, करंट के इक्वेशंस मिलेंगे हमें, हम मैट्रिक्स मेथड से या एनी मेथड से हम सॉल्व करेंगे, हमको करंट के सारे वैल्यू मिल जाएंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ द नोड वोल्टेजेस. सो note that current flows from higher potential to the lower potential. तो हमें यहाँ का वोल्टेज देखना पड़ेगा कि ये करंट ज्यादा है या यहाँ का करंट ज्यादा है, यहाँ का we have to see, and according to these things current will flow from positive to negative potential. It means what? It will move from higher potential to the lower potential. So these are ground terminals. So फॉर नोड 1 वी विल गेट, यहाँ का जो वोल्टेज है वो हमें कैसे मिलेगा, करंट जो है उसका हम इक्वेशन वोल्टेज में लेंगे तो हमें वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएंगे. बिकॉज यदि तुम्हें ऐसे सर्किट डायग्राम मिल रही है तो वहाँ पे तुमको वो करंट के वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे. ये रेजिस्टर मैंने यहाँ पे R1 कंसीडर किया है, बट दे विल गिव द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब 10 ओहम इन किलो ओहम दे विल प्रोवाइड. तो तुम्हें क्या करना है, सारे जो रेजिस्टर के वैल्यू है एक यूनिट में तुमको कन्वर्ट करना है. मतलब यहाँ पे यदि 1 किलो ओहम में है तो यू हैव टू कन्वर्ट इन ओहम, मतलब तुमको जो कंफर्टेबल है यू हैव टू कन्वर्ट. वोल्टेज तुम वोल्ट में मेजर कर सकते हो, करंट तो एम्पियर में. तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस के वैल्यूज दिए हुए हैं, करंट के वैल्यूज दिए हुए हैं, और ये जो बाकी नोड में से जा रही है जो रेजिस्टेंस में वो हमें दिए नहीं है, बट वी विल गेट द इक्वेशंस फ्रॉम KCL. फिर हम क्या कर सकते हैं, we can write the equation of voltage in the form of current because we are having the value of current here. तो हम क्या कर सकते हैं, ये V1 का यदि हम करंट निकाल रहे हैं यहाँ का, तो यहाँ का वोल्टेज विल गो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल. तो हायर पोटेंशियल क्या है, यहाँ का V1 है और ये तो 0 है. सो वी कैन राइट V1 माइनस 0 और यहाँ का जो रेजिस्टर है R1. Accordingly, you can write the equations for remaining current. So we can write I2 equal to, यहाँ का V1 से V2 की तरफ जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2 और उसके नीचे का रेजिस्टर, उसके बीच में जो रेजिस्टेंस है. We will get these equations.
नाउ अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशंस वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ करंट। तो तुम यहाँ पे यदि करंट के और रेजिस्टेंस के वैल्यू लिख दोगे तो तुमको वोल्टेज के वैल्यू मिल जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप्स वी हैव टू सॉल्व द नोड एनालिसिस। फर्स्ट हमें क्या करना है, जितने भी नोड है उसमें से एक नोड को रेफरेंस नोड कंसीडर करना है। बाकी जो रिमेनिंग n-1 नोड है उसे हमें क्या करना है, वहां पे जो भी नोड है उसको वोल्टेज देना है। वी कैन गिव द असाइन द नेम्स v1 v2, तुमको जो देना है तुम नाम दे सकते हो। यू कैन गिव vx vy vz va vb अकॉर्डिंग टू यू। फिर हमें क्या करना है, जो भी नोड है रेफरेंस नोड के अलावा बाकी सब नोड को हमें केसीएल अप्लाई करना है। देन वी विल गेट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ करंट। फिर हमें क्या करना है, जो इक्वेशन है वो सॉल्व करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, बिकॉज वोल्टेज विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल। तो हम क्या करेंगे, उसको अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इक्वेशंस लिखेंगे हम करंट के वोल्टेज के फॉर्म में। हमारे पास रेजिस्टेंस के वैल्यूज है, करंट के वैल्यूज है, तो हमें वोल्टेज के वैल्यू मिल जाएंगे। वी विल सी वन एग्जांपल। वो जो अभी जो इक्वेशन सॉल्व किया है उसको मैंने फिर से बताया है कि कैसे सॉल्व करना है। ये जो हमारा इक्वेशन था फर्स्ट इक्वेशन, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, I1 को हम लिख सकते हैं V1/R1। I2 को जो है हम क्या लिख रहे हैं, वहां पे I2 जो है यू गाइस कैन सी हियर, I2 को क्या लिख सकते हैं हम, V1/R2 माइनस V2/R2। तुम यहाँ पे डिवाइडेशन अलग दो या साथ दो, मैथमेटिकली हैविंग वैल्यू सेम। तो हम मैंने यहाँ पे क्या किया है, V1/R1 प्लस V1/R2, ये फर्स्ट I1 को लिखा है V1/R1, I2 को क्या लिखा है मैंने V1/R2 माइनस V2/R2। यू विल गेट दिस इक्वेशंस, यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट द वैल्यूज। 1/R1 को 1/R1 is nothing but R1 is nothing but resistance, R2 these are nothing but resistance, so this will nothing but a transconductance। तो तुम 1/R1, तुम 1/R1 को सॉल्व करो, जो भी वैल्यू है 1/10 है तो वहां पे रहेगा यू गाइस विल गेट 2 प्लस 0.1, यहाँ पे R2 का जो वैल्यू रहेगा यू विल गेट, एंड I am not writing any value, so I am writing here 1/R1 equal to G1, 1/R2 I am writing G2, and according to these equations, if instead of resistance you are writing transconductance, you will get these equations, and after solving these equations you will get the values of voltages। तुम ऐसे यदि देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट दिस थिंग्स आर वेरी सिंपल। नोड एनालिसिस इज वेरी सिंपल। हमें क्या करना है, सिर्फ हमें एक नोड जो है, जितने नोड है उसमें से एक को रेफरेंस नोड कंसीडर करना है, फिर बाकी जो नोड है उसे हमें केसीएल अप्लाई करना है। हमें जो केसीएल से इक्वेशंस मिल रहे हैं उसे हमें सॉल्व करना है। यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशंस, और तुम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करके I1 I2 वो जो करंट के हैं उसकी वैल्यूज लिख सकते हो, या तुम हम फिर से क्या कर सकते हो, जो भी तुम्हें यहाँ पे नोड मिल रहे हैं वो नोड को तुम क्या कर सकते हो, as voltage is going from positive to negative terminal, according to Ohm's law you can solve the voltage potential difference between these 2 points, between these 2 points, between these 2 points, again you will get the equations here। और फिर हम वो जो करंट है उसको वोल्टेज के फॉर्म में लिख रहे हैं, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फॉर्म में अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। और फिर हमें रेजिस्टेंस को जो है इसके वैल्यू, तो तुम उसको डायरेक्टली मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पे वैल्यूज नहीं दिए हैं इसलिए मैं उसको एज अ ट्रांसकंडक्टेंस कंसीडर करती हूँ। Now we can solve this equation in matrix form and you will get the value of these voltages। Here this is nothing but a matrix, because यहाँ पे हमें 3 वोल्टेज की वैल्यू निकालने हैं ना, 3 नोड के। सो आई एम यूजिंग हियर 3/3 मैट्रिक्स, V1 V2 और V3। हमारे पास 3 अननोन है, we have to calculate the value of these 3 voltages। जैसे कि हमें ये इक्वेशंस मिल जाएंगे, जैसे हमें ये एक इक्वेशन, ये 2 और ये थर्ड इक्वेशन मिल जाएंगे, तो हम ये इक्वेशंस मिलने के बाद क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये 3 इक्वेशंस मिलने के बाद हम उसको मैट्रिक्स में लिखेंगे। तुम्हें जैसे सॉल्व करना है तुम लिख सकते हो।
ये तुमको रजिस्टर के वैल्यू रहेंगे, तो यू विल गेट द वैल्यू हियर। यहाँ पे सब जगह तुमको वैल्यूज मिलेंगे एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट दिस वोल्टेज हियर। और यहाँ पे तुमको डायरेक्टली करंट का वैल्यू -2 दिया है, यहाँ पे IS नहीं दिया है, बट जैसे तुम ये इक्वेशन सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ IS ऑल्सो। जैसे तुम I1, I2, I3 ये रिमेनिंग जो बाकी सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस IS ऑल्सो। सो this is the conductance matrix and this is the n-1 into n-1 matrix. V is nothing but it is the node voltage. ये यहाँ का node 1 का voltage है, node 2 का voltage है, node 3 का voltage है, and this is the current. I is nothing but a current. You have to calculate the value of these voltages. I will send PDF with solved example on Classroom. So please attend each and every class, so it will get convenient to solve these node analysis. There are different types of the analysis like mesh analysis, Thevenin theorem, we have to see Norton's theorem, maximum power theorem. इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे कंसेप्ट हमें पढ़ना है और ये सारे कंसेप्ट तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में जो हम अभी फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं मॉसफेट का जो एनालिसिस का, वहाँ पे हमें वोल्टेज डिवाइडर बायस, देन पोटेंशियल डिवाइडर बायस, तो हम वहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए भी हमें ये KCL KVL हमें यूजफुल है. सो प्लीज ट्राई टू अटेंड ईच एंड एवरी क्लास. थैंक यू. If you guys are facing any difficulty, you can ask me. Otherwise, I will revise the things and we will conclude our class. So in today's session, we have seen energy sources. There are voltage and current energy sources. If it is having constant value, then we can call it is a constant voltage or current source, or we can say it is a ideal. And if it is not having constant value, we can say this is the AC voltage, or we can say it is a practical voltage. This is the classification given for dependent and independent voltage and current source. I have to take firstly attendance. Then we have seen ideal and practical voltage sources. Ideal voltage sources is having constant value. Practical voltage sources is not having constant value. You can see the ideal and practical voltage sources. Here in ideal voltage source, initial resistance is 0. But in practical, there is a finite value of internal resistance. Then we have seen classification of voltage and current. These are nothing but independent time. If value of voltage and current changes with time, then we can call these are the time invariant and variant sources. And if the value of voltage or current is depending on any other voltage or current, we can say these are the dependent voltage sources. Thank you. We can conclude our class here.